Am I audible to all? Am I audible to all? Good morning, sir. Good morning. How are you? Good, sir. There are only 2 people have joined the meeting till now. Where are the rest? Shall we start this? Is the screen visible to you all? Hmm? Just wait a while. There is some problem. I'm sharing this again. But at that day we were discussing in the class collision theory. हम क्लास में collision theory डिस्कस कर रहे थे. आप लोग प्रेजेंट थे क्लास में उस दिन? Yes, sir. So what I told about the collision theory, can anybody give me a gist of it? कोई बेटा मेरे को ये बताएगा collision theory को हम कैसे डिस्कस कर रहे थे उस दिन? क्या डिस्कस किया था हमने collision theory में? Sir, effective collision discuss कर रहा था. Effective collision डिस्कस कर रहे थे. Good. क्या था बेटा effective collision? Sir, the collision which bring about the chemical reaction. The collision which are responsible to bring about Chemical any reactions. So what will be the effective collisions are? Sir, फिर आपने उसकी conditions बताई थी, energy कौन-कौन सी condition और condition बताई बेटा, वही डिस्कस करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा. एक सर एनर्जी की बताई थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है कोलिजन के लिए. और प्रॉपर ओरिएंटेशन की बताई थी, हेड ऑन कोलिजन और प्रॉपर ओरिएंटेशन बताया था. हाँ, उस दिन किसी ने मुझसे क्लास में कोई एक क्वेश्चन पूछा था, क्लास उस समय खत्म हो रही थी. आई वाज नॉट एबल टू गिव द आंसर ऑफ दैट कि प्रॉपर कोलिजन मींस क्या. सिग्मा बॉन्ड पे पूछा था. हाँ, आपने ही पूछा था ना? यस सर. हाँ, तो बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि जैसे हमने आपने अगर इफ यू गाइस रिमेंबर ऑफ योर 11th, तो 11th में आपने जब ये पढ़ा होगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन मींस एस ब्लॉक, मतलब सिग्मा टू सिग्मा. सिग्मा कौन कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड कौन कौन सा होता है बेटा? कौन कौन कंबाइन करते हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है? किसके कॉम्बिनेशन सिग्मा बॉन्ड बनता है? S and S, S and PZ, right? So sigma bond is being formed when S combines with S orbital or S orbital combines with PZ orbital. So proper orientation क्या होगा? Improper orientation बेटा ये होगा कि when S is combining with PX or PY, because PX and PY goes for side-wise overlap, whereas S goes for head-on overlap. Are you getting me? Alvan? Yes sir. Yes sir.
है बेटा आपको ये? प्रॉपर ओरिएंटेशन का मीन्स क्या है कि एस के साथ एस जाए और किसके साथ? पी के साथ इसके साथ पीजेड जा सकता है, लेकिन अगर और पीएक्स के साथ पी वाई ओवरलैप करेगा, फाइन, दिस इज प्रॉपर ओरिएंटेशन. इट्स नॉट सिग्मा और पाई. इट इज लाइक which one can form bond with which one? Fine. S cannot form bond with px और py. हम थोड़ा सा क्लास में डिस्कस करेंगे इसको, और अभी आप एक छोटा सा टॉपिक कर लीजिए, दैट इज सूडो केमिकल रिएक्शंस. सूडो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? The reactions which are not truly of first order but under certain conditions become reaction of first order are called pseudo first order reactions. Pseudo reactions बेटा वो होंगी जो कैसी होंगी? फर्स्ट ऑर्डर की होंगी तो नहीं, बट कुछ कंडीशंस के अंदर वो फर्स्ट ऑर्डर जैसी लगेंगी. लाइक अगर आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की कोई सी भी रिएक्शन ले लो, सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कराओ, हाइड्रोलाइसिस किसी का भी कर लो आप, सो जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होगी, अगर हम यहाँ पर देखें बेटा, तो दिस इज CH3COO-C2H5. स्क्रीन इज विजिबल टू यू? यस सर. हाँ, तो यहाँ पर अगर हम इसका रेट निकालेंगे बेटा, तो रेट इसका क्या आएगा? रेट इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO-C2H5 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. एंड तो यहाँ के हिसाब से अगर हम देखें, इट हैज टू बी अ टू ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन because two reactants are present and both have stoichiometric coefficient 1, so P plus Q will be 2 in this case. तो ये रिएक्शन जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होनी चाहिए. बट why we are calling it a pseudo chemical reaction? Because the concentration of water is always taken as unity. You have studied in 11th. so जैसे ही हम वाटर के कंसंट्रेशन में यूनिटी लगाएंगे, रेट क्या आ जाएगा इसका? Somebody was asking something. कोई कुछ पूछ रहा था? देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर ये रेट देखिए, आप जैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, why this is happening this? Just a bit a while. तो जैसे ही हम यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन इस रिएक्शन में 1 पुट करेंगे, इसका रेट हो जाएगा K इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ दिस इथाइल एसीटेट. सो अब अगर मैं यहाँ से इसका रेट निकालूंगा, तो यहाँ से अगर मैं इसका ऑर्डर कैलकुलेट करता हूं, तो ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन कम्स आउट 1 ऑर्डर. फाइन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सूडो केमिकल रिएक्शंस. होती कुछ और है और दिखती कुछ और है. फाइन, चलिए थोड़ा सा कल्यूजन थ्योरी दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज आई टोल्ड यू एट दैट डे आल्सो दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो कल्यूजन थ्योरी में हमने उस दिन क्या पढ़ा था बेटा? हमने कल्यूजन थ्योरी में आपको जो बता रहा था वो ये बता रहा था कि किसी भी कंपाउंड के पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कैसा सीजलेस मोशन होता है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने से उनके बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होते हैं, और बॉन्ड ब्रेक डाउन होने के बाद प्रोडक्ट के नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं. इसके बाद मैंने आपको एक टर्म बताई थी, दैट इज कल्यूजन फ्रीक्वेंसी. तो हमने क्या कहा था? पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड जितने कल्यूजन्स हो रहे हैं, मींस the number of molecules colliding per unit volume per second is known as collision frequency. The order of collision frequency is 10 raised to the power 10 to 10 raised to the power 20, जो कि हमने क्लास में डिस्कस किया था. एक बहुत हाई ऑर्डर है. जब ये बहुत हाई ऑर्डर है, इट मींस व्हाट? अलवान यस सर. एज इसका ऑर्डर बहुत हाई है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा बेटा? सर बहुत ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगा, मतलब बहुत कम टाइम में हो जाएगा. मतलब इतने सारे जब नंबर ऑफ collisions are taking place per second, it means the reaction will take place in a split of a second or less than that.
फाइन, बट यूजुअली इट टेक्स सम टाइम, एकदम नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है, जितने नंबर ऑफ कल्यूजन्स हो रहे हैं, यानी जो कल्यूजन फ्रीक्वेंसी है दैट इज 10 raised to the power 10 to 10 raised to the power 20, इस कल्यूजन फ्रीक्वेंसी में जितने भी कल्यूजन्स हो रहे हैं वो सारे रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसके होने के लिए, रिएक्शन के होने के लिए। क्लियर? सो रिएक्शन के होने के लिए जो कल्यूजन्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव कल्यूजन्स। फाइन, सो फर्स्ट यू नीड टू नोट इट डाउन व्हाट, कल्यूजन फ्रीक्वेंसी। हेडिंग डालिए, कल्यूजन थ्योरी में पहला हेडिंग डालिए कल्यूजन फ्रीक्वेंसी, एंड नोट इट डाउन दिस, the number of collisions that take place per second per unit volume of the reaction is known as collision frequency. Number of collisions that take place per second per unit volume of the reaction mixture is known as collision frequency. नोट कर लिया आप लोगों ने? सर प्लीज। हेलो अविका, कर लिया? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। The number of collisions that take place per second per unit volume of the reaction. Number of collisions that take place per second per unit volume of the reaction mixture is known as collision frequency. Now note it down, Avika. Yes. And इसके आगे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, it is represented by Z. It is represented by Z. Clear? Yes. And next line में लिखिए Z equals to 10 raised to the power 10 to 10 raised to the power 20. Or make it further corrected, 10 raised to the power 25 to 10 raised to the power 28. Fine. Now next line से लिखिए, if all the collisions are effective in forming the product, if all the collisions are effective in forming the product, the reaction must be completed in a very short time. If all the collisions are effective in forming the product, the reaction must be completed in a very short time. But actually, most of the chemical reactions are slow and take much longer time for their completion. Note it down. Alvan, यस सर। नोट कर लिया यहाँ तक? यस सर, कर लिया। अनमोल, वेयर इज Yes, अनमोल? sir. हो गया नोट? Yes, sir. And Mayank, what about you? यस सर। हो गया नोट बेटा? इसके बाद लिखिएगा, Yes, sir. it means all the collisions among the reactant. It means all the collisions among the reacting species at a given temperature are not effective in bringing about a chemical reaction. It means all the collisions among the reacting species at a given temperature are not effective in bringing about the chemical reaction. The collisions which actually produce the product and therefore result in the chemical reaction are called effective collisions. Fine. इतना हमने उस दिन समझ लिया था, ठीक है? Now heading डालिए effective collisions. The heading is effective collision. The collisions which actually produce the product and therefore result in chemical reaction are called effective collisions. The collisions
which actually produce the products and therefore result in the chemical reaction are called effective collisions. For next line में, for any collision to be effective, it must have to cross two barriers named as, for any collision to be effective, for any collision to be effective, it must have to cross two barriers, which are number 1 energy barrier, number 2 orientation barrier. अलवन, यस सर। एनर्जी बैरियर बताओ बेटा जरा, उस दिन बताया था क्लास में। सर किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, और जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। हाँ, और गैसियस रिएक्शन में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, मतलब ओके, गैसियस में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, क्लियर कह रहे हो अलवन, इज इट राइट? नो नो सर उल्टा बोल दिया। हाँ, उल्टा बोल दिया, तो गैसेस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो प्रेजेंट होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, सर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है गैसियस, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, कल्यूजन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। इट्स राइट नाउ, फाइन। सो फर्स्ट नोटेड डाउन एनर्जी बैरियर, the minimum amount of energy which the colliding molecule must possess, the minimum amount of energy which the colliding molecule must possess is known as threshold energy. Again, the minimum amount of energy which the colliding molecule must possess is known as threshold energy. Alvan, today you have a single period of chemistry, na? यस सर। Afterwards you have a period of physics, if I'm not wrong, or you No, have sir. physics period हो चुका आपका? सर फिजिक्स के फर्स्ट और सेकंड थे। Okay, so how many students were there in that class? सर 7 to 8। And in this class there are only 4 students are present. Why is it so? Sir, because in that class most of them were maths students and in chemistry there are not. Okay, you all are from bio. No sir, sir, we I'm from maths. Anmol and me from bio and Mayank and Avika are maths Are students. from maths. Okay, fine. तब तो ये इतना नोट डाउन कर लिया, the minimum amount of energy which the colliding molecule must possess is known as threshold energy. It means only those collisions of reactants will give product which possess energies greater than threshold energy. It means only those collisions of reactants will give product which possesses energies greater than threshold energies. Clear? Avika, are you noting down or not? Yes, sir. Yes, sir. I'm done. And then the second point is orientation barrier. The colliding molecule should have proper orientation. Fine. Should have proper orientation. बेटा ये वाला एक डायग्राम आप कंस्ट्रक्ट करेंगे इसमें, this one नाइट्रोजन वाला, N2O plus N2O कोलाइड कर रहे हैं, यहाँ पे कोलिजन देखिएगा कैसा हो रहा है, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, नाइट्रोजन इज कोलाइडिंग विद नाइट्रोजन एंड हेंस द बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म्ड. क्लियर? Yes sir. नाउ सेकंड फिगर में आप देखिए कि नाइट्रोजन इज नॉट कोलाइडिंग विद नाइट्रोजन, इट इज कोलाइडिंग विद अनदर, दैट इज ऑक्सीजन, एंड दैट इज व्हाई नो बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म्ड एंड मॉलिक्यूल क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा. क्लियर बेटा? Yes sir. ये दोनों फिगर बना लीजिएगा बेटा, जब भी पेपर में पूछा जाएगा यू विल शो अ सिंगल फिगर फॉर ओरिएंटेशन बैरियर.
and if you'll make these two, then it will be more good. Fine. So अगर हम बेटा इसका postulates करेंगे इसके orientation के collision theory के, so लिखिए postulates of collision theory. Postulates of collision theory. Number 1, for a reaction to occur, there must be collisions between the reacting species. For reaction to occur, there must be collisions between the reacting species. Number 2, only certain fraction of the total number of collisions are effective in forming the products. Only a certain fraction of the total number of collisions are effective in forming the product. Number 3, for effective collisions, the molecule should possess sufficient energy as well as proper orientation. For effective collision, the molecule should possess sufficient energy as well as proper orientation. Fine. Now, if we want to calculate the rate of a reaction with the help of collision theory, so as you can see here, this is rate equals to minus dx upon dt equals to f into z. So collision theory से अगर मुझे rate निकालना होगा, what I'll do, while I'll multiply f with z. Here z is what? Z is collision frequency and f is fraction of effective collisions. Clear, beta? Yes, sir. Now, man, could you brief me out? Just make me revise 2 things. Are you there, Mayank? Mayank? Yes, sir. Could you tell me what is effective collisions? What are effective collisions? Mayank, I'm asking to you, beta. Until unless you guys won't reply me, how could I come to know that you are understanding the topic? अनमोल? Yes, sir. बेटा आप बताओगे मेरे को? Sir, the collision which bring about a chemical reaction are known as effective collisions. Effective collisions. 2 बैरियर क्रॉस करने होते हैं, हमने ये तो कर ही लिया है. किसी भी collision को effective collision होने के लिए it has to cross 2 barriers. One is orientation barrier, another is energy barrier. Energy barrier. अगर मुझे रेट निकालना हो तो बेटा कौन सा फॉर्मूला बताया मैंने? Sir, dx by dt equals to f into z. Here f क्या है बेटा? Sir, frequency, collision frequency. नहीं sir, fraction of. हाँ, fraction of effective collision, and z is collision frequency. Clear? अब बेटा जब factors affecting the rate of a reaction, तो उसमें हमने एक factor करा था, that is temperature. और उस समय मैंने आपको ये बताया था, for every 10 degree rise in the temperature, the rate of a reaction becomes double. Clear? ये हमने बताया था. तो अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए समझना चाहें कि how the rate of a reaction becomes double if we are
इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री। तो कैसे होगा बेटा, अगर हम ये वाला, आप इधर को थोड़ी देर के लिए ग्राफ देखो, ग्राफ दिख रहा है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज। यस सर। हाँ, सो यहाँ पर क्या है, यस अगर ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसमें लास्ट में, जस्ट अ मिनट, आई विल पिक इट सम, ये देखिए यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर ये देखें, फाइन, सो इट इज व्हाट, इट इज द इफेक्टिव कोल्यूजन्स। क्लियर, विजिबल हो रहा है? हमने मान लिया कि ये पोर्शन जो है दैट इज शोइंग द इफेक्टिव कोल्यूजन्स, ओनली दीज कोल्यूजन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग अबाउट एनी केमिकल रिएक्शन। इतनी बात क्लियर हो रही है बेटा? ये दिख रहा है ना सर्कल आप लोगों को? सर, ये मैक्सवेल का ग्राफ है। हाँ, दिस इज द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। फाइन बेटा? ओके सर। तो इसमें आप ये देखिए, हमने ये जो ग्राफ प्लॉट किया है, इसमें मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओ सॉरी, एक्स एक्सिस पे एनर्जी एंड वाई एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को अगर आप चेकआउट करोगे, तो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम है। यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे इस पॉइंट पर। फाइन, सो यहाँ पर जो उनकी स्पीड होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट विल बी नोन एज व्हाट, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। और इस ग्राफ में ये वाला जो पोर्शन है दैट इज शोइंग द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोल्यूजन्स। कितने इफेक्टिव कोल्यूजन हो रहे हैं? दिस शेडेड पोर्शन इज शोइंग दैट दिस एरिया होल्ड्स द number of effective collisions. Now if we'll go down in it and हम रेज कर रहे हैं इसका टेम्परेचर बाय हाउ मच, 10 डिग्री। तो जैसे ही हम इसका टेम्परेचर 10 डिग्री रेज करेंगे, क्या होगा, 10 डिग्री रेज करेंगे, काइनेटिक स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से क्या होगा, ये जो ग्राफ है ये कैसा हो जाएगा, थोड़ा फ्लैटेंड हो जाएगा। ये देखिएगा, ये वाला जो T2 पर हम ग्राफ देख रहे हैं, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर देखना, T1 पर ये वाला ग्राफ था, T2 पर हमने क्या करा, जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, कितना, 10 डिग्री, ये ग्राफ क्या हुआ, ये फ्लैटेंड हो गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से ग्राफ कैसा हो गया, फ्लैटेंड डाउन हो गया। अर्लियर जो इफेक्टिव कोल्यूजन था, दैट वाज शोन बाय दिस एरिया A, B, C and D, राइट अलवन? यस सर। पहले क्या हो रहा था, जो इफेक्टिव कोल्यूजन शो कर रहा था वो कौन सा एरिया था, A, B, C, D। लेटर ऑन जैसे ही मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये ग्राफ कैसा हुआ, फ्लैटन डाउन हुआ। फ्लैटन डाउन होने की वजह से अब जो इफेक्टिव कोल्यूजन शो कर रहा है, मैं इस लाइन को अगर ऊपर की तरफ रेज कर दूं, तो इफेक्टिव कोल्यूजन कौन सा एरिया शो कर रहा होगा मयंक? AFDE, AFEB, राइट? EB, BE, ABEF। सो अगर आप यहां पर देखो तो अर्लियर क्या था, जो एरिया था दैट वाज ABCD, and later on this area will become how much, AFEB, EB, fine। so the area becomes double। एरिया कैसा हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। जब एरिया ऑलमोस्ट डबल हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोल्यूजन डबल हो जा रहे हैं, और जब नंबर ऑफ इफेक्टिव कोल्यूजन डबल हो जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर? डबल। इज देयर एनी डाउट इन दिस? सर, ये वाला ग्राफ और जो 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में ग्राफ था, दोनों सेम ही है ये? हाँ, दोनों सेम है, बट ये वहां पर उतना स्टडी नहीं किया था इन ग्राफ्स को, यहाँ पर हम बहुत ज्यादा, यहाँ पर थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं। क्लियर?
यस सर। अब अब इसको नोट डाउन कर लीजिए जरा। पहले तो पहला वाला ग्राफ बना लीजिए। बना लिया था उस समय, नहीं बनाया था? No. ये वाला ग्राफ बनाइए फर्स्ट। कंस्ट्रक्ट दिस ग्राफ। एंड स्टार्ट नोटिंग डाउन। लिखिए। शैल वी बिगिन? लिखिए। Collisions between the moving molecules, collisions between the moving molecules do not possess the same kinetic energy. Collisions between the moving molecules do not possess the same kinetic energy. Do not possess the same kinetic energy because their energies are transferred from one molecule to another. Thus, there is a distribution of kinetic energy among reactant molecules. Thus, there is a distribution of kinetic energies among reacting molecules. Fine. Which is clearly shown in the graph plotted above. Which is clearly shown in the graph plotted above. This is called Maxwell distribution of energies. This is called Maxwell's distribution of energies. From the above graph, it is clear that the fraction of molecules having very low or very high energy is very small. Fraction of molecules having very low and very high energies is very small. Most of the molecules have intermediate kinetic energies as shown by the peak in the graph. Most of the molecules have intermediate kinetic energies as shown by the peak in the graph. This peak corresponds to most probable kinetic energy. This peak corresponds to most probable kinetic energies. In the figure, E corresponds to minimum or threshold energy required for effective collision. In the figure or in the graph, E corresponds to minimum or threshold energy required for effective collisions. The molecules having energies equal to or greater than E will result in the formation of product, and this fraction of molecules capable of effective collision is very small. The molecules having energies equal to or greater than E will result in the formation of products, and this fraction of molecules capable of effective collision is very small. Note it down. Anmol, Avika, Mayank, note it down. Yes, sir. हाँ, इसके बाद लिखिएगा
It is being evident from here, from this graph. It is evident from this graph that for reaction having low values of E, there will be larger fraction of colliding molecules, which produce effective collision. And hence, rate of a reaction will be high. On the other hand, if the value of E for a particular reaction is high, then only a few collisions will be sufficient. Then only a few collisions will be sufficient energetic to give product, while all other collisions be ineffective, and the reaction will proceed slowly. Now, if we raise the temperature by 10 degrees, it is clear from this graph. You need to make this graph also, the second one. It is clear from the graph that the curve gets shifted towards the right, indicating that at higher temperature the molecules have higher energies. मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जैसे ही टेम्परेचर हम रेज करेंगे kinetic energy molecules की increase कर जाएगी and the curves gets flattened down. Further the curve at high temperature is flatter than at the lower temperature, which also indicates that the number of molecules with higher energies content have increased. Clear? Alwan, clear? Yes, sir. Note कर लिया? Yes, sir. करा है नहीं करा है? Otherwise you need to show me this tomorrow in the class. Sir, करा है, अभी दिखा दूं. ठीक है बेटा, आगे लिखिए. The minimum energy required for the effective collision is shown by, in the first graph is by the area ABCD at temperature T1 and area ABEF at temperature T2. As the area ABEF roughly twice large as ABCD, the rate of a reaction depends upon the number of molecules which possess energies larger than threshold energy. It may be interpreted that the fraction of molecules possessing threshold energy has increased approximately 2 times, and hence rate increases by 2 times for a rise of 10 degrees